तो बहुत बेटर है। चलो फिर यू कैन स्टार्ट। Okay, so my name is Arzu Raj. So I was born and brought up in Boston. My father is an engineer who works under the government of Bihar, and my mother is a school member. So I've completed my primary as well as secondary education from Atmara Engineering Family. So I opted for commerce in my senior secondary school, and thereby I went on to complete my graduation in commerce from Atmaram Sanatan Health College of University of Delhi. अच्छा, 1 मिनट होल्ड करो। अभी भी थोड़ा इको है, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तुम्हें आवाज़ में। अभी इधर नहीं आ रहा। इको आ रहा है थोड़ा, मतलब वो ब्लर हो जा रही है आवाज़। तो कैन यू यूज़ अ ईयरफोन? कोई ईयरफोन नहीं है तुम्हारे पास? मेरे पास यही था, मतलब मैं सोचा था कि कुछ अगर इश्यूज आएगा तो फिर मैं किसी से बोलूंगा। हाँ, तो आसपास से किसी से अरेंज कर लेना। अभी तो ठीक है, अभी आई विल बी टेकिंग योर इंटरव्यू बाय दिस ओनली। बट अरेंज ठीक है। करके या तो उसको चेक कर लेना, हमसे ही चेक करा लेना, या फिर किसी और से एक बार चेक करा लेना कि वॉइस क्लैरिटी है कि नहीं। क्योंकि वो फिर ठीक प्रोफेसर ना बहुत चीज़ें पूछते नहीं है, अगर वॉइस क्लैरिटी नहीं होती है तो मतलब दे टेंड टू एंड द इंटरव्यू एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। ठीक तो सो मेक द वेरी कंजीनियल इन्वायरमेंट, जिससे कि उनको बहुत अच्छा लगे तुम्हारे सामने बैठने में, ठीक है। यस। आवाज़ वाज चलो ठीक है। नाउ कम कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। So, in my graduation years, in my second year of graduation, I have interned at a cradle NGO where my primary task was to create budgets for the projects of the NGO. Other than that, I have done few certification courses in order to learn data analysis through software, SPSS software, and Microsoft Excel. Other than all this, I'm a trained dancer and I like to play and watch cricket. And very recently, I have gained interest in reading fictional novels. So So, that's okay, Arju, matlab you have done all the certification quite related to data analytics only. Jैसे SPSS, all the entire concept of SPSS can be used for data analytics, and SPSS itself, matlab used for research and other things. And you have also done a certificate in data analytics, and the last certificate that you told, that was about Microsoft Excel. Microsoft Excel. हाँ, Microsoft Excel. So मतलब your entire interest goes towards academic or research orientation. So how do you think you will be, मतलब regarding banking, you have not done any other certification or anything. So it was the lack of interest in banking, or we were looking career for analytics only. No, sir. Actually, I've liked the numbers and analysis portion of what these finance courses are about. So I just wanted to learn the basics of it because I had decided that I'll be going for my masters in finance field as such. So I decided to complete at least the basic one, so it won't create a much of a issue later on in my masters. So that's the reason I had actually done like I've learned about XIR rates and NPV rates in Microsoft Excel. So it would benefit me later. Okay. So can you tell me what is the standard deviation? Okay, sir. So standard deviation is a measure of actually a dispersion. Like if we want to know how much our data is more or less than, or I should say, deviating from the mean value. So in order to, we actually calculate standard deviation in order to know how much our data is dispersed from the mean, the average value. So what is the formula for standard deviation? Okay, what we do is write the data in a table. Okay, we calculate the x minus x, that is the how much the numbers are actually deviating. Hmm. We put the square of it, all the numbers, and the formula for it is under. So why don't you just take the average of deviation rather than squaring it first and then. So it actually provides a better view of like uh, uh, I should say like yeah, okay. So we could have just done the average of deviation. We could have taken average of deviation. So most of the time you can tell that the average of deviation is bit zero, because if you have taken average, so the left deviation and the right deviation will be the same if you sum every deviation. So in that case you could have done the modulus, use the modulus. You can just use the positive, and even all the deviation is as a positive deviation. But why do we square it and then and make square root of it?
to find out standard deviation? So I don't think I really know the Okay, technical part. okay. So now tell me, what is the formula for uh, compound interest? Compound interest. Uh, there is something. Acha, what is compound interest? Can you differentiate compound interest from simple Yes, sir. interest? Okay. So simple interest is something that you are putting out interest equally for every year, right? Hmm. But in a compound interest, you are actually compounding all the numbers. Like in first year, if the interest is calculated on 100, Hmm. so the interest is calculated on 100. In the second year, the interest is if it is 10%. Then in second year, the interest is calculated on 110, and so on. It goes on increasing. The principal amount basically goes on increasing. So the amount of the percent of interest is now calculated on the compounded amount. So this is the basic. So you just don't remember the formula, but you know what is compound Yes, interest. I think I just forgot. I just So, forgot the so formula. can you tell me what would the interest, compound interest, for 2 years, at 20% rate of interest, when the principal is 100 only? Okay, sir. So the first year is 100. So the first year will be 100. 120. So I'll just calculate this. Okay, take your time. So it is going to be 44 rupees for 44 2 years. rupees. Okay, nice. So what does bank use for interest calculation? Simple interest or compound interest? The compound interest. It's very obvious. Yes. But compounded on every what tenure? So, so, so monthly, I guess, the interest is calculated for the previous month. Okay. Yes. Chalo, but tell me other thing. What are the major banking services that you see or that you Banking know? service. Mm. Okay, so we could actually deposit our amounts. We could actually That is earn an saving account. saving account. Yes, sir. Other than that, we could use the current accounts for the business transactions. Like we don't actually get the So amount of what is the interest rate for current account? we don't have actually have an interest, I guess, in the current account. Its sole purpose is to for the transaction of businesses. Like there is no limit as such to take out money from the account, or like in saving accounts we don't have. So the current account is basically used for the business transactions. So Okay. they do not have interest. So other services. What are the other services that Okay, bank other provides? services. Okay, banks also provide a letter of credit, like for international transactions. Whenever, like, if any business wants to acquire goods from the another country, they just do not, they don't trust each other, and also there is lack of funds at the present time. So banks issue letter of credits in the name of the buyer, so that the smooth functioning of the basically the trade function could be performed. Other than this, fixed deposits, the banks also provide fixed deposit to the general people, general public. Um, So can you tell me so what is the difference between fixed deposit and mutual funds? fixed deposit. Okay, so mutual fund. First of all, I'd like to define what is a mutual fund. So basically, a mutual fund is a group of professionals basically who is taking out our money and investing in the stock market Hmm. in different shares according to their own professional informations and their own teachings. And in fixed deposit, it is a term deposit. Like we actually deposit our money with the banks, and at a subsequent date, we'll be getting our money back. We cannot get our money whenever we demand. Like, it's different from demand deposit. So we cannot get our money back, money when we demand for it. So basically, this is fixed deposit, and
the amount that the banks provide on rate of interest basically is more on fixed for. This is Sure. And what is the rate of interest that is provided by mutual funds? the rate of interest. So it is totally based on the like if the mutual funds have invested in the stock market, so it's totally based on the market ups Market and link. downs. Well, it is market linked. So Yes, it so is market so linked. so how does bank assures they will be earning that amount of interest from FD? Because in order to give you higher rate of interest than saving account, they must earn, you know, in a same way from other sources also. So how does bank earns through that investment that you are making in FD? So I guess they do invest in a lot of companies as such, and in It is same their as value. mutual fund. Is it same as mutual funds? No, sir. Like I don't get what. But Manav, you said that banks also invest in lots of company. So it is the kind of same thing, na? Like funds are also being invested Mm, in. Hmm. no, some mutual funds is taking the money from the public, like Hmm. who is a less informative about the And technicalities that is of being company. invested in share market. So Yes, sir. where does bank invest the money that they take in FD? Where does they invest? Okay. So they do invest in the. I guess, I think I'm getting a little confused. Okay, leave it. So what were your favorite subject in your graduation? So in my graduation years, I like financial accounting, the Hmm. corporate accounting. Hmm. Uh, Moreover, I had opted for economics to study about the economic, basically the economical situations that is then like I had Indian economy as the subject to understand the basics of Indian economy. Okay. So can you tell me what are the role of RBI in Indian economy? The role of RBI. Okay, so RBI actually plays a huge role. Like it's a banker's bank too. It represents our government of India too on IMF level, and moreover, it actually provides a regulate. It actually plays a role of regulation. Like it actually acts as a bank's head. Like if any crisis situation occurs in our country, the RBI is the one who is an authority to take these decisions uh, for the economy. Like it perform functions such as it actually controls the money supply in the economy, how much money should be injected in the economy, how much money should be taken out from the economy. Hmm. This is like one of the primary functions that it performs. Moreover, it provide facilities to the commercial banks and provide regulatory functions to these small finance banks or the cooperative banks. So yes, sir. Okay. So you said that you like financial accounting as a subject. So was there also any subject based on management accounting? Yes, Okay. So can you tell me what is debt equity ratio? debt equity ratio. Okay. So equity ratio is totally like calculated like if you put debt in the numerator, equity in the denominator. It actually shows how much debt the company has owed with respect to its equity. Like how much percent of loans and the long term borrowings do the companies have in respect of the company's fund, the shareholders fund. So So this is what is the ideal value of this ratio? debt equity ratio shouldn't be I guess it is uh, 2:1 or yes something like 2:1 I guess like it is somewhat 2:1 and like two debt and equity should be important. Like, it is something like that. Okay. Tell me, matlab, what is the difference between banking and commerce? Okay, okay, so commerce No, is sorry, no, a sorry, huge. not banking and commerce. My mistake. Business and commerce. Okay, okay. Commerce is business is something that is a part of commerce. Commerce is a huge field. It's a wide field, basically consisting of a lot of elements like
like in finance, or like you're doing a business and you're having a business for manufacturing or anything, it is a part of commerce. Commerce basically involves the trading functions, you uh, like uh, it is okay, first of all, I just like to clear out with the business thing. Like business is something like uh, you are conducting a business. Like commercial banks are actually commencing the business functions. Like they are taking money and providing loans, and in that they are earning profit. So basically, these are the business functions, right? And commerce is totally a whole a wide range which consists of various elements, right? Like finance, as I said, and business is one of the part of Okay, so now tell me, what do you look for yourself in next 10 years? it. So it is somewhat related to, I just want to learn in my initial years, like in my 2 years, and after that, I want to learn the technicalities, and I want to implement this in a long term. In long term, I want to have an uh, have an idea about the technicalities of this banking institution, so that I could take steps and decisions that actually have an impact for my institution. Okay. So one last question that again will be a fact-based or knowledge-based question. Can you tell me what are Basel norms? Basal norms. Yes, sir. Okay, okay. Just a minute. Yeah. It is basically the three norms were initiated by Basel Committee, I guess, and I had actually read about it that uh, Chalo, thank you. I just Okay, forgot. okay, no issue, no issue. It's okay, thank you. So as far as the comment or the feedback that I can give you is, see, you don't have to know everything, you know, but you must know what is the utility and core functionality of anything. जैसे and there were too many I guess in your इंटरव्यू है ना, मतलब आप हर चीज़ आधा अधूरा जानते हो, ऐसा सही नहीं है। एंड मैं शुरू से बताता हूँ, जैसे हाँ, जैसे तुमने एस पी एस एस वगैरह जैसे मैंने पूछा कि मतलब वॉज योर इंटरेस्ट इन डेटा एनालिटिक्स ओनली और नाउ यू आर शिफ्टिंग टू बैंकिंग, तो आप ऐसा भी बोल सकते थे कि मतलब जो मुझे ऐसा हुआ ही होगा बेसिकली कि जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है विच इज़ somehow aligned to your future goals, है ना, और मतलब वे वर्क फॉर योर फ्यूचर, आप वो कर लेते हो, आप उसको छोड़ते नहीं हो। तो एस पी एस एस वगैरह की जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, यू डिडंट लूज दैट, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ हम बैंकिंग का कुछ आएगा तभी करेंगे, है ना। एंड व्हेन यू Yes. नो कि दीज मैथमेटिकल टर्म्स, दिस यूजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग कैन हेल्प यू इन योर फ्यूचर ऑल्सो, है ना, फ्यूचर गोल्स ऑल्सो, तो वो डायरेक्ट अलाइंड है। एनालिटिक्स भी बैंकिंग में यूज़ होता है, फाइनेंस में यूज़ होता है ना, तो देर वॉज नो वो डेविएशन नहीं है, वो बिल्कुल अलाइंड है, और जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली यू डिड दैट। सेकेंड वो है कि जैसे बैंकिंग के फंक्शंस मैंने बताए तो बहुत सारे हैं। तुमने सेविंग अकाउंट बोला, करंट अकाउंट बोला, फिर उसके बाद यू स्टार्टेड Like एक्सप्लेनिंग वन, हाँ वो क्रेडिट लाइन जो है वो एक्सप्लेन करने लगे, उसकी ज़रूरत नहीं थी, आपको सर्विस के नेम बताने हैं। एंड देयर वर टू मेनी सर्विसेज दैट बैंक्स कंडक्ट्स, एफडी है, और म्यूचुअल फंड्स भी हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, है ना, लोन्स हैं, एजुकेशन लोन्स है, हाउस लोन्स है, कार लोन्स है। housing. तो ये सारे सर्विसेज को बस एक एक करके बता देना था, ठीक है। और मतलब फॉर योर मतलब तुम्हारे एजुकेशन उसमें करंट मतलब सॉरी वो कंपाउंड इंटरेस्ट को तो मतलब उसके नब्स को तुम्हें जानना चाहिए, मतलब यू कैन जस्ट यू शुड हैव जस्ट टोल्ड मी कि इस 100 पे 144 होगा, है ना। तो आई डोंट Okay. नो, यू डिड नॉट डू लॉट मेनी क्वेश्चंस अबाउट इट, जबकि कैट का भी तुमने प्रिपरेशन किया होगा, तो वहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट Yes. वगैरह किया होगा, और उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए। तो तुम बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें लग रहा है तुम नहीं ज़्यादा ब्रशअप कर रहे हो, है ना। गो एंड सी व्हाट आर द बेसिक थिंग्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनी, मतलब या तो बैंकिंग डोमेन में और या कॉमर्स डोमेन में, और उसको पढ़ो। सिमिलरली जैसे हमने पूछा रोल ऑफ आरबीआई इन इंडियन इकोनॉमी, तो मैं एक्टिविटी ऑफ आरबीआई नहीं पूछ रहा था, है ना। यू स्टार्टेड विथ मेनली एक्टिविटीज ऑफ आरबीआई, हम रोल पूछे,
तो रोल ऑफ इन इंडियन इकोनॉमी बेसिकली, तो उसको आपको ये जो लास्ट में तुमने बताया ना कि मनी मनी कंट्रोल सप्लाई करता है, मनी सप्लाई क्यों करते हैं, मतलब दैट कंट्रोलिंग। व्हाट डज दे डू, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पे, वो तुम्हें बताना था। तो आरबीआई का रोल इंडियन इकोनॉमी पे पूछा है, ना कि मैंने उनकी एक्टिविटीज पूछी। ठीक है, ये याद रखना। जैसे ये तो और लोगों को भी बताते हैं, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, तो व्हेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा कि रोल ऑफ आरबीआई इन इंडियन इकोनॉमी पूछा, आपने आरबीआई की सारी फंक्शनैलिटी लिख दी, आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको बताना है कि इकोनॉमी में उनका क्या रोल है। तो जैसे इकोनॉमी में ऐसा होता है कि जब पीपल आर नॉट बाइंग, है ना, पीपल आर नॉट बाइंग, तो वो इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, सो दैट लोगों को बैंक का रखा हुआ पैसा जो है वो लगे कि कोई फायदा नहीं है, कुछ खरीद लो, है ना। पीपल, इफ पीपल आर नॉट, जैसे बैंक जो से लोन नहीं ले रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर देते हैं, सो दैट बैंक कैन गिव मोर इंटरेस्ट, मतलब लेस इंटरेस्ट टू द बिजनेसेस, है ना। तो इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज करती हैं जिससे कि आरबीआई इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकता है, इन्वेस्टमेंट में भी, स्पेंडिंग में भी, बैंकिंग सर्विसेज के उसमें भी, है ना। तो उनकी फंक्शनैलिटी बताने की बजाय आप रोल बताओ। आज पढ़ लो इसको फिर से, मतलब नहीं आरबीआई सर, है। मतलब सर मतलब पता था मेरे को कि लाइक ये वाला तो आंसर पता ही था, बट आई थिंक मैंने उसे गलत तरीके से फ्रेम किया हाँ, कि मतलब जैसे जैसे मैंने आस्किंग की व्हाट आर द फंक्शनैलिटी ऑफ आरबीआई, तब तुम वो चीज़ें बताते हैं कि वो एसएलआर, सीआरआर ये सब डिफाइन करते हैं, है ना, बैंक इंटरेस्ट रेट डिफाइन करते हैं, है ना, दे आल्सो कंट्रोल द मनी, है ना, उसको प्रिंट से तो सर, लेकर, तो तो ये वो सब मैंने सब। पढ़ा। हाँ, तो ये सब तो हाँ फंक्शनैलिटी है ना, बट ये मैंने पूछा नहीं था। आई हाँ। वाज आस्किंग व्हाट इज द रोल ऑफ, है ना। और उसके बाद एक वो भी था, जो लॉन्ग टर्म गोल्स है ना, तो अब जब व्हेन यू स्टार्टेड विद द कोर्स, है ना, व्हेन यू आर स्पेंडिंग अराउंड 9 to 10 लाख रुपीज ऑन द कोर्स, है ना, कितना फी हो गया एनआईबीएम का सर ऑलमोस्ट। 9 to 10 लाख हाँ, 10 तो lakhs। इतना इतना फी पे करने के बाद, पे करने पे और 2 साल आप अपना इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो फिर रिसेंट ईयर्स यू आर लुकिंग इन द सेम डोमेन, योर सेल्फ इन सेम डोमेन, तो एटलीस्ट उसमें भी तुम विजुलाइज कर सकते हो कि हम बैंकिंग में ही आगे बढ़ना चाहते हैं या बैंकिंग कंसल्टिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो किस तरह के प्रोफाइल में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो तुमको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। जैसे बैंक्स में भी कई तरह के प्रोफाइल्स होते हैं, ऑडिट से लेकर, है ना, बैंकिंग रेगुलरिटी से लेकर बैंकिंग स्ट्रेटजी कंसल्टिंग, कई सारी प्रोफाइल्स होती हैं, उसको थोड़ा देख के, है ना, ट्राई टू फाइंड कि जो आपके कॉलेज के बच्चे हैं, जो 10 साल पहले जिन्होंने एमबीए किया है, उनका क्या क्या रोल प्रोफाइल सभी हैं, तो उसमें से एक बताओ कि प्रॉब्ली आई वुड बी लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल। थोड़ा लगता है ना कि हाँ आप अलाइंड हो, ठीक है। और जो डेप्ट इक्विटी रेशियो पूछा, तो ये सब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह के टर्म्स हैं, है ना, वो थोड़े ब्रशअप कर लो। उनके डिफिनीशन जानने से ज़्यादा ज़रूरी है यूटिलिटी जानना, है ना। तो वो भी, और थोड़ा बहुत वहाँ पे जैसे एफडीआई, जैसे बैंक्स की पूरी फंक्शनलिटी आपको समझ, जैसे एफडी, जो एफडी का जो वो है पैसा है, वो बैंक कहाँ इन्वेस्ट करती है, हाउ डज दे अर्न, हाउ डू दे अर्न, ठीक है, म्यूचुअल फंड से अलग कैसे है एफडी, ये सब थोड़ा और भी समझ लो, तो आई थिंक इट विल बी ओके, है ना। और अदरवाइज इट वाज गुड, मतलब तुम्हारा ओवरऑल कम्युनिकेशन अच्छा है, हाउ डू यू पिच योर आंसर, वो भी ठीक है। बट ये जो थोड़ा वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा, वो तुमको और कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि होता क्या है ना कि वाइल वी आर स्पीकिंग टू समवन अननोन, तो आप ऐसे भी थोड़ा सा ना अलग सेटअप में होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें भूलने की टेंडेंसी होती है, तो बेटर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंक्रीट रहे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो वो सब मेंटेन करके तुम जाकर देना, और बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा तुम्हारा, ठीक है।